Assalamu alaikum. Our today's topic is Ism Sawt, sound words, the words that represent the voice. For example, in English, hens cluck. उर्दू में मुर्गी की कुकड़ों को, गोट मो, बकरी की मै मै, बर्ड्स सिंग, चिड़िया की चूं चूं, क्रोज कॉ, कव्वे की काएं काएं, बीज हम, मक्खी की भिन भिन, कैट्स म्यो, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं। जो अल्फाज किसी जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करें उन्हें कहते हैं इसम सौत। एक दफ़ा दोबारा देखिए, मुर्गी की कुकड़ों को, बकरी की मै मै, चिड़िया की चूं चूं, कव्वे की काएं काएं, मक्खी की भिन भिन, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं। These words are called ism sawt in Urdu, and in English we know them as sound words. Hope you find today's lesson interesting and easy. Until the next lesson, Allah Hafiz. Jazakallah khair.